यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अभी हमने पढ़ लिया है वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में और वर्क के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्विलिब्रियम्स। यस, हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम। देखिए, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंस द नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो तो द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यस, इफ नेट फोर्स acting on a body is zero, then it is said to be in equilibrium. To be in इक्विलिब्रियम। अब जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस है, उन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वी विल डिस्कस द थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। सो द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। So there are three types of equilibrium. There are three types of equilibrium. Like first one is stable equilibrium. The second one is unstable equilibrium. And third one is neutral equilibrium. So types of equilibriums are stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. अब देखो इक्विलिब्रियम में हम और क्या क्या है, like the first one is stable equilibrium. देखो, अगर इक्विलिब्रियम है तो सबसे पहले तो नेट फोर्स इज जीरो। Now we know this thing कि the work potential energy, change in potential energy is negative of the work done by a conservative force. That means change in potential energy negative of work done by conservative force मतलब F dot ds। मतलब for this you can also say कि F is equal to minus du by ds or du by dr। So for stable equilibrium के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज du by ds is zero। सेकेंड आई कैन से दिस थिंग कि एट द स्पॉट ऑफ इक्विलिब्रियम आई एम गिविंग यू द मैथमेटिकल रिलेशन फर्स्ट, d square u by ds square is zero, ग्रेटर देन जीरो। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखो, stable equilibrium is a equilibrium position from where if body is displaced then it reaches to the it restores
its equilibrium position again. मतलब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर दोबारा रीस्टोर कर ले, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो मान लो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये बाउल है, इसके सरफेस पे मान लो कोई भी एक पार्टिकल रखा है, मास m रखा है, इट इज एट इक्विलिब्रियम, और इसको हल्का सा अगर मैं डिस्प्लेस कर दूं तो ये आगे जाएगा एंड इट अगेन रीचेस टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. या फिर मान लो हमारे पास चार्जेस हैं, मान लो ये भी Q1 चार्ज है, प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, एंड देयर इज अ चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम. मान लो कोई भी चार्ज है माइनस Q या प्लस Q/2. अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो ये फोर्स ज्यादा लगने लगेगी, अगेन इट विल रीच एट दिस पोजीशन. दिस इज आल्सो द केस फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसके अलावा आपके उस स्टेबल इक्विलिब्रियम से और क्या सीखना चाहिए? देखो, एक अगर मैं यहां पर if I take the graph of the potential energy versus displacement, U versus S, let's suppose the graph is like this. I am marking the 3 points here. This is the point A, this is the point B, and this is the point C. Now, if you will see all the 3 points A, B, C, then at point A, at point B, and at point C, at all the 3 points, you can easily observe the slope of the U versus S graph is 0. And if the slope of U versus S graph is 0, so it means you can say this thing, कि at these points, the equilibrium is there. इस point पे भी इसका slope 0 है. If you will draw the tangent, let's what tangent is this. If you will draw the tangent there, it is slope is 0. If you will draw the tangent there, slope is 0. Right? Now, which is the position for the stable equilibrium and which is the position for unstable equilibrium? Graph में देख रहे हैं. देखो, so first condition is कि du by ds is 0. Now look at these situations. अगर आप इस सिचुएशन पे जाते हो, मान लो इस सिचुएशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करो बॉडी को, मान लो आप यहां आते हो तो x विल गेट पॉजिटिव या s विल गेट पॉजिटिव, बट जैसे ही x पॉजिटिव होता है द du by ds स्लोप ऑफ इट्स विल गेट पॉजिटिव. स्लोप इज पॉजिटिव बट द फोर्स इज नेगेटिव ऑफ दिस, इट विल बिकम, बट द फोर्स विल गेट इन अपोजिट डायरेक्शन. व्हेन x इज पॉजिटिव द फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. इससे हमें क्या पता लग रहा है? अगर मैं उसको पॉजिटिवली डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, द फोर्स विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इट विल अगेन रीस्टोर इट्स पोजीशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विच पोजीशन? यू कैन से स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो इट्स अ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. राइट? नाउ यू कैन इजिली सी कि इट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या इट इज द पोजीशन. We know by the graphical analysis that at the points of maxima and minimas, we know this thing कि maxima और minimas के point पर हमारे पास जो ग्राफ का स्लोप होता है वो 0 होता है, और जो हमारे मिनिमास होते हैं वहां पर उसकी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होती है. तो दैट्स व्हाई द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ U versus S graph is positive at the point of stable equilibrium. That's why I have written this mathematical point. Are you getting it? So basically we have analyzed the stable equilibrium by the 3 things, या by the 3 ways. That is, first is by the journal analysis, कि वह body will displace by some displacement and it will again restore its original equilibrium position. If it again restore its original equilibrium position, then it is called to be stable equilibrium. या फिर another is from graph. The equilibrium is attained at the points where the slope is 0.
Now, it is the points where slope is 0 as well as you can say, the slope is 0 as well as you can say कि if it is placed from in one direction, x is positive, so it will get a force towards negative, right? So it is the thing. The next is the unstable equilibrium. So next is unstable equilibrium. देखो, it is an equilibrium position from where if body is displaced, then it becomes unstable and starts moving. You can say then force X in the direction of displacement and starts moving. जैसे मान लो हमारे पास ये है, this is the example for it. मान लो इट इज द सरफेस, दिस इज द पॉइंट, ये बाउल है जिसके पॉइंट है. अगर मैं इसको यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे इट विल अगेन स्टार्ट्स मूविंग, ये मूव करना शुरू कर देगा, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल, राइट. सेम थिंग इफ यू विल टेक, ये मान लो माइनस क्यू है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज द पॉइंट, यहां पर आपने प्लस क्यू रख रखा है मान लो. इफ यू विल डिस्प्लेस इट लेटर, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, दिस फोर्स विल डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट इट विल इंक्रीज, तो ये इसकी तरफ मूव कर जाएगा अनस्टेबल, राइट. तो यू कैन से एट दिस du by ds is again 0, but because force is 0, मतलब माइनस du by ds is 0, मतलब du by ds is 0, बट और क्या मैं बोल सकता हूं, d square u by ds square it is less than 0. जैसे अब इस पॉइंट्स में देखो, जैसे यहां देखोगे आप a is the point, if you will displace a particle from point a, let's suppose आपने इधर मूव किया, the x is positive but its slope gets negative, and if its slope gets negative and if we multiply the negative slope with the force is negative of the slope with the negative, then it will become force is positive. The force is positive means when it is displaced in x direction, it will experience a positive force and it will starts moving, right? So it's a point of, you can say it's a point of unstable equilibrium. It is a point of unstable equilibrium. Is it clear to all of you? So it's a point of unstable equilibrium there. Next is neutral equilibrium.
देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम वेयर इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड then it attains a new equilibrium position. It attains a new equilibrium position. अब इस टाइम पर भी फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो. फोर्स जीरो तो मतलब du by ds zero, and here d square u by ds square is zero. For this you can observe like this. Like this is the surface and the body is displaced on it. When it is displaced on it, then it will again attain the, मान लो ये इसकी इक्विलिब्रियम है. When it is displaced from there, it will again attain the equilibrium. Right? So it is the case for the equilibrium on the surface. Here, look at this point C. At point C, if we will observe, तो C point पे हमारे पास जो इसका स्लोप है वो जीरो है. लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो C पॉइंट के इधर उधर भी द फोर्स एक्टिंग और यू कैन से द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज जीरो. तो मतलब द फोर्स इज स्टिल जीरो. अगर फोर्स जीरो है तो मैं ये चीज बिल्कुल आराम से बोल सकता हूं कि C इज द पॉइंट ऑफ, दैट इज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. सो C इज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इज इट राइट? यस. So is it clear to all of you? So this is about the equilibriums. Next. Next is the relation between conservative force and potential energy. Relation between conservative force and potential energy. देखो yes, we know कि for a conservative force the change in potential energy, it is negative of the work done. Work done you can say F dot ds. Change in potential energy you can take like du is this. Right? So if you will want to calculate total change in potential energy, integrate it. That will become delta U. That will be minus of integration of F dot ds. Where F is a conservative force. Right? Now the next thing we can say also that du is minus F dot ds if F vector is fx I cap plus fz k cap and ds vector is
dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. So what is du? It will become minus fx dx minus of fy dy minus of fz dz. If y is constant, z is constant, then dy comma dz is 0. So here will become fx will become minus du by dx such that इसके अंदर ये चीज है कि यहाँ पर y और z क्या है, कांस्टेंट. इसको मैथमेटिक्स की भाषा में पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी लिख देते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स. सिमिलरली fy is written as minus del u by del y and fz is written as minus del u by del z. Right? So f will become minus del u by del x I cap minus del u by del y j cap minus del u by del z k cap. This is the force F. That's what this is the equation 2 and this is the equation 1. Relation 1 is used when conservative force vector is given and potential energy is to be calculated. And relation 2 is used when potential energy function is given and we want to derive force vector. Right? So it is the relation between the
the potential energy and you can say the conservative force. Please write down the question now. A particle is moving under a conservative force varies with position x as shown. Mark positions of equilibrium and its type. Like, which are the positions of equilibrium there? This is the force changing with distance. तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? Like ये S is equal to A, तो its solution. Equilibriums are attained at those points where force acting on a particle is zero. This is A and B. Here A and B are equilibrium positions. But which is stable. जैसे इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से अगर थोड़ा सा आगे इसको डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इज पॉजिटिव, इट विल स्टार्ट मूविंग. थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, फोर्स पॉजिटिव है तो मूव करना शुरू कर देगा. सिमिलरली अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, फोर्स इज नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव है तो मूव करेगा बट इट विल रीस्टोर इट्स पोजीशन. आगे की तरफ मूव करेगा, इसमें रीस्टोर करेगा. तो ए इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. A is stable equilibrium and B is unstable equilibrium.
right? Write down the question now. Next, a particle is moving in a plane where potential energy is changing as u is equal to 3x square y plus 2xy. Calculate value of conservative force at a point 2, 3. So we have given u potential energy function. So what is F? Minus del u by del x I cap plus minus del u by del y j cap minus del u by del z k cap. What is minus del u by del x? That is minus of del by del x of this. Differentiation करो इसकी. It is 3y into 2x plus 2y. Put the values of point. Similarly, minus del u by del y. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इसके करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगी 2x और del u by del z कितना आएगा 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट. तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं एट p 2,3 एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी x को 2 y को 3 पुट करो x को 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 4 into 3 12 12 into 3 36 so it will become 36 and this will become 2 into 3 6 36 and 6 is 42 तो minus of 42 x को 2 पुट करो 2 2 जा 4 y को 3 पुट करो 3 3 जा 9 9 into 4 is 36 and 2 3 पुट करेंगे 6 that is 42 that is minus 42. What is fy? x को 2 पुट करो 2 2 जा 4 4 into 3 12 2 पुट करो 2 2 जा 4 12 plus 4 16 तो minus 16. So what is f vector? Minus 42 I cap minus 16 j cap.
So it will become minus 42 I cap minus 16 j cap, the force vector at this position. Clear? Next we go. A particle moves in a conservative field such that its potential energy changing with small r as a by r square minus b by r, where a and b are positive constant. Right? And second thing you can say, calculate position of equilibrium R naught and its type. So we can say U is given as what? A by R square minus B by R. So what is the force? It is minus du by dr. A by R square की डिफरेंशिएशन R raised to power minus 2 की minus 2 into R cube. B by R plus B by R square, and the force is 0 at the point of equilibrium. So from there you will get 2A by R cube, it is B by R square. So it is 0 when R is equal to B by 2A. 2A by B. If you want to check what is the differentiation there, what is the position type, so do its double differentiation. D square U by dr square. Now it's a single differentiation. अगर इसकी दोबारा करने जाएंगे तो क्या बनेगा? Minus 2 is constant, R cube की differentiation R raised to power minus 3
माइनस 3 बाई आर की पावर 4 प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर आर की पावर माइनस 2 दैट इज माइनस 2 बाई आर क्यूब दैट विल बिकम 6a बाई आर की पावर 4 माइनस 2b बाई आर क्यूब. If I put R is equal to 2a by b, R is 2a by b, यहाँ पुट करो. अगर R को मैं 2a by b पुट करूंगा तो it will become 2 into a. 2a by पुट करो, a कैंसिल हो जाएगा. 2 raised to power 4, b की पावर 4 बनेगा. 2 raised to power 4 is 16. 16 that will become 6 by 16. 6 by 16 को लिख सकता हूँ मैं 3 b की पावर 4 by 8 that will remain a cube minus 2b by r को ये पुट करो that will come 2a cube that is 8a cube by b cube. b cube तो ऊपर गया, b की पावर 4 और नीचे बचेगा 4. We take the LCM, it will come out to be 8a cube this. It will come out to be 3b square minus 2b की power 4. That is b की power 4 by this. That is positive because a and b is positive, greater than 0. And if d square u by dr square is greater than 0 at the given position, so it is the position of which? Stable equilibrium. So it is a position of stable equilibrium, right? So we can say like this. Next, देखो आगे मैं क्या कर सकता हूँ. गिव द नेक्स्ट हेडिंग पावर. Power is defined as ability to do work. Or it is work done per unit time. So power is work done per unit time. यूनिट क्या होगी इसकी? वॉट. डायमेंशन फॉर्मूला जूल पर सेकेंड है. टू टी माइनस 3. फर्स्ट इज एवरेज पावर.
This is the ratio of total work to total time taken. मतलब P average is upon total time. Next is instantaneous power. That is the work done rate at which work is done at a given instant. P instantaneous it is. So P instantaneous is dW by dt. At that instant, force is constant. F dot V. P instantaneous. Right? So this is about the power. लिखा इसको